Hello guys and welcome back to my channel, The Security Academy. In this video I am going to talk about routing. What is routing? Routing concepts are very crucial when we work in networking world and specifically into the security. So routing, as the name indicate, it's route your packets from source to destination. Consider you're traveling from one location to the another location. How you travel? For example, consider I am in a Pune right now and I want to go to Delhi. How I can go from Pune to Delhi? Which train, air, or the bus or vehicle I will consider for my travel? Then what path I should take to reach to Delhi? Then what is the best path for me to reach Delhi, right? What path save my time? All those things I'm going to consider, right? This is what in a layman language I would consider the routing is. Routing is nothing but considering how one packet from source to destination going to travel. So in the routing world we have different algorithms, different protocols, different techniques to understand this. Okay, so consider basic things. There are two things which is widely used in a routing world. Number one is your routing protocols and number two is your routed protocols. So what I'll do, I'll just create a simple difference. Like one side I will say routed protocols and another side I will say routing protocols. So without these two, the routing is incomplete, or one of it is missing, then also the routing is incomplete. So how? I'll just tell you. First, understand what is routing protocol. Routing protocols are the protocols which carries information related to your routes. They understand what algorithms need to be used to exchange the information. They understand what would be the conflicts, what would be the issue comes in the network. They manage all those things. For example, in a routing I would say the protocols like a RIP version 2, OSPF, BJP, all those things come in the picture. But when I talk about the routed protocols, the routed protocols are like IP, IPv4, IPv6, like those. Routed protocols also important because whatever the data need to be carried via these routing protocols, that need to be handled via routed protocols. How it is? Consider this example. I have a requirement where I need to open a website of my one of the web server what I have hosted in one of the branch office, right? So consider that branch office is in Delhi and I am sitting right now in a Pune. So how I can go ahead and do that? Basic thing is that you go to your PC, then type that web server IP address or a site name and that site get open. But what are the things come in between? How your PC is communicate to that web server site, whatever it is, and you get the result. So consider this. So you are sitting somewhere, say here, right? This is your PC and this is in Pune. Okay, now I have a web server here which is in Delhi. Okay, and I have a web server name, I would say the Network Academy. Okay, and that is what the site name itself. I need to type here on my web browser and something from this site will appear here. Okay, so what are the things come in the picture when I talk in this sense? So consider, number one thing I need to do, I have my PC. My PC need to have some IP address. Consider 192.168.1.1. I'll give that IP address to my PC. This web server also having some IP address. Consider for now 1.1.1.1. So here
your source is this IP address and destination is this IP address, right? So this IP address need to communicate to this IP address. That will happen how? That is the question. So this will happen, consider this IP address having the header formats where you will specify this IP information, but when this IP need to get travel via this PC to this web server, it need to be defined somewhere, right? Your web server and your PC having some IP address, and that need to get communicated. So how it will communicate? Number one thing, your PC need to type that IP address and the web server need to acknowledge to that, right? So that communication need to happen. But that communication, how it will happen? It is happen via some protocol. That protocol is nothing but your router protocols. Consider here the IP. Now this information will be taken care by your routed protocols, right? And when this information need to travel to this web server, that thing need to take care by your routing protocols. So routing protocol is nothing but calculating your best path, calculating the best path to reach to a web server. For example, consider your maps. So Google Maps is one of the classic example I would like to give here. So what Google Maps do, they find a best path to reach to your destination, right? Because Google Maps having multiple algorithms installed in that, and based on that algorithms they search a best path for you to reach to your destination, correct? Like that, these routing protocols also do the same. They find the best path to reach to this destination. How they do that? Based on different algorithms, right? So in routing world, as I told you, we have a different protocols like RIP, EIGRP, then BGP, right? So I hope you understand this much. Now let's understand like how this routing protocols works with respect to different algorithms. So if you learn deeper into the routing protocols, you'll be getting something like, there is something called a interior routing protocol, and there is something called exterior routing protocols. We'll talk more on that later part, but now understand what is this interior routing protocols. So in interior routing protocols, there is two things comes. I just give it a name like interior routing protocols, right? The two things comes. Number one is your distance vector routing protocols, and one is your link state. Okay. What this means, the distance vector and link state, these are the nothing but the certain phenomena or algorithms we have in a considered for the working of routing thing. So distance vector is nothing but the sharing the complete routing information to your neighboring routers, and in that it will, for example, if something change over routers, for example, router got down, some routes got missed, something like that, some failure happens, good route is available to reach to the destinations, all those details entirely get transferred to the neighboring routers. That is come under the distance vector. And when I talk about the link state is nothing but same phenomena, but instead of sending entire details of the routing things, only the changes what happen, what things got modified, those small details get sent to the neighboring routers. So only difference is that here you will see more details is coming, and here limited details is coming which is needed. So operationally, if I say the speeding thing,
So link state is more faster than the distance vector, and out of this protocol, say RIP is working as a distance vector protocols, and I would add one more thing, OSPF. So OSPF working as your link state protocol. Okay, I think this information is enough for now to know what is the basic of the routing. I hope you understand this. Let me just clear it up and I'll just explain you the main topic, what we're going to discuss on this video, and followed by that we'll be having the lab. So we are going to talk about the RIP. RIP is nothing but a routing protocol which generally used for small sort of setup. So routing information protocol, what is the RIP called, the stand for. And consider if your organization is small and having limited branches, limited network subnets, limited things, so you will be using RIP. Consider a small organization, small network, that is something where we use RIP. RIP have two versions, RIP version 1 and RIP version 2. So in RIP, I would say how the calculation happens between the two different site, or say from the source to destination, is based on your distance vector routing things. As I said, distance vector where all the information togetherly sent to the neighboring routers. So consider your organization having say requirement of 4 routers, okay, and that 4 routers are connected to each other, right? So this information get transferred from one router to another router via these routes, right? And this routes information, whatever the exchange happens based on the distance vector routing things, right? When I talk more about the RIP have the metric which is called a phenomena where we understand like what is the capacity of the RIP to work in a network. So the metric what we have for the RIP is hop counts. Okay, what do you mean by hop count? Hop is nothing but your routers. So 1 2 3 4, right? These are the hops. So RIP have that matrix and it supports only 15 routers. So if in your network you have only 15 routers, then the RIP will work well. If you have more than 15 routers, for example 16 routers introduced, that will not work. I mean, that will consider as I would say the not reachable router, and only the 15 up to the 15 routers the communication will work. So that is what we have for the RIP. And version 1 is something which is deprecated, we don't use. Even most of the organization, they don't use RIP, they don't want to use RIP because of certain issues of the networking things. But having said that, the RIP version 1 is deprecated kind of thing, but RIP version 2 is in use. The difference between the RIP version 1 and RIP version 2 is that when you calculate the subnet, right, RIP version 2 you can define entire subnet, right? For example, you have /24 subnet, you can introduce, you can have that entire subnet into the network to communicate. Whereas in RIP version 1 you will not have this facility, you will be limited to number of the host, separately. So you need to define each and everything very separately. That is what the drawback of the RIP version 1.
And RIP version 2, we don't have that drawback. You can introduce entire your subnet to in a communication with respect to RIP. Okay, so one more thing I would like to discuss before going to lab. There is something called administrative distance. The trustworthy net between your routing information which is traveling to one side to the another side, uh, which you will calculate between 0 to 255, so that trustworthy net what we have for the RIP is your 120. Okay, so 120 is the administrative distance what we have for the RIP. Like that, we have other protocols like EIGRP. It has a 90, OSPF it has 110. But nowadays all the routers and the latest firewalls, they come up with the the code which we can modify, where we change this administrative distance based on our requirements, and we can proceed accordingly. So I hope you guys understand what is the routing and the router protocols, and what is the routing, and what is the RIP. So let's go to the lab now. सो गाइज इसमें हम अभी राउटर्स के कॉन्फ़िगरेशंस के लिए प्रोसीड करते हैं। आज आप स्क्रीन पे देख रहे हो वी हैव 3 राउटर्स, राउटर ए, राउटर बी एंड राउटर सी। सो राउटर ए का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो लेट मी गो इनटू दैट राउटर ए, और यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन साइज एडजस्ट करता हूँ सो दैट यू कैन सी इट वेल। 14 is sufficient. Apply. So router और A, this one, ये राउटर A. So इसमें अगर मुझे रिफ कॉन्फ़िगर करना है तो जो सारी कमांड्स रिक्वायर्ड है वो हम अभी इंटर करेंगे। सबसे पहले इसका नाम चेंज कर लेते हैं। सो सिंपली टाइप होस्ट नेम। बिफोर दैट लेट मी गो टू द कॉन्फ़िग मोड, बिकॉज आपके जो भी चेंजेस होंगे वो कॉन्फ़िगरेशन मोड से होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्फ़िग। तो अभी मैं कॉन्फ़िग मोड में हूँ। सो सबसे पहले राउटर का नेम जो है वो चेंज कर लेते हैं। कमांड इज होस्ट नेम, और उसके बाद आपको जो होस्ट नेम चाहिए यू कैन पुट। सो ऐसे राउटर ए, इंटर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये कमांड का यूज हुआ है, और आई कैन सी राउटर ए एज अ नेम। ओके, नाउ इस अगर मैं यहाँ पे कमांड टाइप करूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये कॉन्फ़िग मोड है तो शो कमांड के लिए यू नीड टू टाइप डू। आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई इंटरफेस पे कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है, राइट? सो उससे हम पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो सेफर साइड मैं यहाँ पे आईपी एड्रेसेस पहले दे देता हूँ सो दैट इजी होगा इंटरफेस पे जाके कॉन्फ़िगर करना। लेट मी जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसके लिए आईपी होगा फॉर G01 192.168.12.1 को थोड़ा सा ये बराबर, इसको मैं डुप्लीकेट बोल देता हूँ, और इस इंटरफेस का आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फॉर द विजिबिलिटी पर्पस। सो
इसका आईपी होगा 192.168.1.1। वैसे ही let's configure other interface IP address just for the visibility purpose। तो यहाँ पे IP होगा 12.2। तो बेसिकली इसके आगे रखते हैं बेटरमेंट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डुप्लीकेट और यहाँ पे मैं आईपी दे देता हूँ 23.2 और यहाँ पे 23.1। ये थोड़ा विजिबिलिटी के लिए अच्छा होगा। और इस इंटरफेस पे विल बी गिविंग आईपी फ्रॉम दिस सबनेट। ये जो भी सबनेट है इसमें से कोई भी आईपी हम यहाँ पे दे देंगे। ओके, सो लेट्स गो टू राउटर। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसी इंटरफेस पे कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। तो कॉन्फ़िगर करते हैं। कमांड सिंपल है, यू कैन टाइप इंटरफेस। so if I press tab you will get complete name। so interface और फिलहाल कॉन्फ़िगर करते हैं गीगाबिट इथरनेट 00। so गीगाबिट इंटरनेट 00। तो नाउ मैं इस इंटरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया हूँ। तो इस इंटरफेस पे जो भी कॉन्फ़िगर करना है मैं यहाँ से कर सकता हूँ, राइट। तो कमांड इज आईपी एड्रेस, अगर मुझे आईपी एड्रेस देना है तो। और इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। और सबनेट मास्क 255.255.255 और उसके आगे यू कैन टाइप 252 or /24 depending on your requirement, right? So I prefer 252 for now। Enter। Abhi if I write one command do show IP interface brief तो आपको यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर दिख जाएगा, बट समवेयर ये इंटरफेस डाउन है, राइट। सो इस इंटरफेस को अप करना है तो देयर इज अ कमांड नो शट। तो बेसिकली नो शट डाउन लाइक दैट। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। अभी इसको जैसे मैं रन करता हूँ इट विल शो यू एडमिनिस्ट्रेटिवली अप। और फिर से अगर मैं इंटरफेस पे जाता हूँ देखने को तो आई कैन सी यहाँ पे ये 192.168.1.1 IP address is configured and it is up status। okay, so exit कर लेते हैं यहाँ से, right। same we will configure the other interface। जैसे कि इसी का इंटरफेस है 01। so interface Z01 और उसका IP एड्रेस 192.168.12.1 सबनेट मास्क 252। ओके, और नो शट। तो अगर मैं फिर से डू शो आईपी इंटरफेस बिट करता हूँ सो आई कैन सी माय बोथ इंटरफेस, ये वाला और ये वाला 00 और 01 इज अप नाउ। ओके, तो ये राउटर पे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। बट नाउ आई कैन सी वन थिंग हियर, duplicate address, right। so interface
00 पे यू सी डुप्लीकेट आईपी एड्रेस। इसका रीजन ये है, मे बी यहाँ पे मैंने जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है इस पीसी में, वो आईपी एड्रेस है 1.1, ओके, बिकॉज सेम नेटवर्क है। दैट्स व्हाई ये यहाँ पे डुप्लीकेट एड्रेस एरर थ्रो कर रहा है। देयर इज सम कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रेटिट्यूअस एआरपी। उसका काम ये होता है टू चेक if some duplicate IP addresses is got configured or there is some changes in network where कहीं पे कुछ चेंज होने के बाद such sort of things happens, तो वो एक बार जैसे हम इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो आई एम श्योर यहाँ पे मैंने जो आईपी दिया है वो है 1.1। सो अभी हम क्या करते हैं फॉर द सेफर साइड टू अवॉइड दिस एरर, यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस 1.2 ले लेता हूँ, ओके, सो दैट एरर चली जाए। सो एग्जिट, और मुझे उस इंटरफेस पे जाना है, इंटरफेस G00, और आई विल टाइप आईपी, नो आईपी एड्रेस फर्स्ट, ओके, सो दैट उस इंटरफेस पे कोई आईपी होगा नहीं, जैसे कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और उसके आगे मैं डू लगाता हूँ तो आई सी यहाँ पे आईपी एड्रेस निकल गया है बट इंटरफेस अप है, राइट। सो व्हाट आई विल डू नाउ, यहाँ पे मैं एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लूंगा जो होगा 192.168.1.2, okay, 255, 255, 255, 252, ओके। अभी मैं फिर से सेम कमांड रन करता हूँ तो आई कैन सी इंटरफेस का आईपी चेंज हो गया, और अभी वी विल नॉट गेट दैट एरर बिकॉज डुप्लीकेशन भी निकल गया, ओके। सो एग्जिट करते हैं। नाउ हम रिप का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। सो रिप कॉन्फ़िगरेशन के लिए वी हैव अ कमांड्स जो अभी हम रन करेंगे। सो राउटर रिप इज अ कमांड जो हम रन करेंगे, और इंटर करते ही हम राउटर रिप के कॉन्फ़िगरेशन में इंटर कर देते हैं, ओके। अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ तो आई विल, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो आई विल गेट जो भी रिप की कमांड्स है, ओके। नाउ वी आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग राउटर रिप वर्जन 1, हम राउटर रिप वर्जन 2 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसलिए विल टाइप वर्जन 2 इंटर, राइट। नाउ we need to say no auto summary because auto summarization हमें नहीं चाहिए, so we'll type this command। और अभी रिप कॉन्फ़िगरेशन में हमें कौन से नेटवर्क्स कॉल करने हैं वो नेटवर्क्स हम यहाँ पे बताएंगे। सो नेटवर्क we need 192.168.1.0 and 12.0. So network 192.168.1.0, so ये by default /24 कंसिडर कर लेगा। if I type this और enter this, अगर मैं क्वेश्चन मार्क कर लेता हूँ तो it will consider that, enter। Similarly we will have the network 192.168.12.0। सो रिप में दोनों नेटवर्क्स आ गए।
इस राउटर में वी हैव ये वाला नेटवर्क एंड दिस वन नेटवर्क 192.168.1.0 192.168.12.0. नाउ जो कम्युनिकेशन होना है इज बिटवीन routers for RIP sort of communication, right? So अगर मुझे कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्ट करने हैं बिटवीन RIP के जो भी अपडेट्स होंगे, आई वांट दोज अपडेट्स टू गो बिटवीन द राउटर्स, फॉर एग्जांपल राउटर ए, राउटर बी, राउटर सी, और ये लिंक से कम्युनिकेशन हो. सो मैं यहाँ पे ये वाला लिंक है इसको पैसिव कर दूंगा बिकॉज आई डोंट वांट एनी RIP अपडेट गो ऑन दिस लिंक. इसका फायदा यही होगा कि प्रोसेसिंग इज गेटिंग फास्टर, राउटर पे कम लोड आएगा, और इस लिंक पे भी we will not have much congestion. So for that, what I'll do, I'll type a command, say passive interface, और वहां पे मैं इंटरफेस का नाम डाल दूंगा. तो क्या होगा, RIP अपडेट्स यहाँ पे इस इंटरफेस पे प्रोसेस नहीं करेंगे. सो दिस इज अ बेसिक RIP कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने राउटर 1 पे अप्लाई कर दिया है. ओके, नाउ यही कॉन्फ़िगरेशन बट नेटवर्क्स अलग होंगे. जैसे कि यहाँ पे हमने इस राउटर ए पे 192.168.1.0 12.0 ये दोनों कॉन्फ़िगर किए बिकॉज दीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स. सिमिलरली हम राउटर बी पे भी सेम कॉन्फ़िगर करेंगे बट इसके डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड जो है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल 192.168.2.0 और 192.168.23.0, और यहाँ पे राउटर सी में 192.168.3.0 एंड 192.168.23.0 ये दोनों नेटवर्क्स हम इंटर करेंगे, राइट? यहाँ पे 3 नेटवर्क आएंगे क्योंकि यहाँ पे 12.0 ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर. ओके, सो same cheese I'm going to configure. Okay, just go ahead and watch this, और once ये configuration हो जाता है then we'll talk about the next part. तो जैसे मैंने डिस्कस किया यहाँ पे हम डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स लेंगे. सो जैसे ये राउटर है, so यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड इफ आई सी I can see 3 directly connected networks. One is 192.168.2.0, another one is 198.168.23.0 and 192.168.12.0. So ये तीनों network we will put into RIP communication. Okay, so command is network and यहाँ पे हम networks देंगे 192.168.2.0. then same command, the 12.0 is another one. The same command we have a network 23.0. Okay, so we need this 3 interface to be configured. Once configured, let's write it. So फिलहाल राउटर 2 और राउटर बी का RIP कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है, right? Similarly, we'll go to the router C and configure the RIP. Similarly, राउटर A में जो हमने कॉन्फ़िगर किया था, if we don't want Z00 take a participation in RIP updates, तो उससे हम
पैसिव बना देते हैं. So say passive interface and we give z00. Then do right. Okay. So तीनों राउटर में रिप कॉन्फ़िगर हो चुका है एंड राउटर ए से राउटर सी तक कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं, वी विल चेक नाउ. बिफोर दैट लेट्स गो टू दिस पीसी और यहाँ पे हम थोड़ा कॉन्फ़िग चेक कर लेते हैं. सो आईपी कॉन्फ़िग ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाल दी है कमांड एंड यू सी 192.168.1.1 इज द आईपी एंड इसका जो डिफॉल्ट गेटवे है इज दिस राउटर. ओके, let's go to the this PC and we'll see what config we have here. So let me type ipconfig. So IP address for this PC is also configured और इसका default gateway is 2.2 300. Okay, and यहाँ पे मैं एक बार पिंग करके देखता हूँ इसका डिफॉल्ट गेटवे. इफ इट इज पिंगिंग 192.168.2.2, so it's pinging. Good. Now let's go to the this PC and see if यहाँ पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर है. आई थिंक यहाँ पे कॉन्फ़िगर किए नहीं है, तो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट. लेट्स गो टू द अडाप्टर और यहाँ से IPv4. so यहाँ पे I'll give manual IP address. So IP address would be 192.168.3.1. Subnet mask आ गया by default and okay, 192.168 3.2 is the default gateway. For the safer side, just putting the DNS close. Okay, let me see if I am able to ping the default gateway. Ping 192.168.3.2. So I'm pinging. All right. So फिलहाल basic configuration is done and I think the RIP configuration जो हम करना चाहते थे वो भी completed है. So next step we need to check my connectivity from PC1 to this PC. For example, यहाँ से 192.168.1.0 नेटवर्क से आई एम एबल टू पिंग 2.0 नेटवर्क और 3.0 नेटवर्क और उसके बाद विल सी द वेरिफिकेशंस की रिप कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस चाहिए और everything looks good. Okay, so I'll go to this PC and what I'll do, I try to ping this PC, so 3.0. so ping 192.168.3.1. see, I can ping it. If I say ipconfig, so my PC's IP address is 1.1 and I'm going to 3.1. Similarly, I'll go to check if I'm able to ping 2.1 and I can ping this PC also. All right, so this connectivity from this PC to this PC is done. This PC to this PC is also done, and I'm sure
Reverse connectivity also there. For example, from 3.0 to 1.0. So I'll just simply type command ping 192.168.1.1. So I am pinging it. Okay. Lastly, just for the sake of just for the sake of just for the sake of testing, I'm just pinging this. So ping 192.168.1.1. I can ping, and let's do this 3.1. So RIP is working as expected, but now let's see RIP configuration, how it looks when I run some show commands. So we need to exit from this and we need to come to this mode जहाँ पे हम show command चलाएंगे. Let me just increase the font little bit. All right. So command to check RIP show IP route RIP. So from RIP, whatever the routes we have learned, we can see here. So number one, if you see 2.0 is our next network. I am going to that via this IP address. For example, 192.168.1.1 wanted to communicate to 192.168.2.0. How that communication will happen? So the packet from this PC initiate, it will go to the router. Now router have this route, जैसे कि आप देख रहे हो कि राउटर के पास ये राउट है, राइट? सो राउटर नो कि अगर मेरा पैकेट 2.0 डेस्टिनेशन के लिए इनिशिएट हुआ है और फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पैकेट आया है उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 192.168.2.0 है, उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क 192.168.2.0 है, तो मुझे वो पैकेट कहाँ पे फॉरवर्ड करना है? तो राउटर नो आई हैव टू फॉरवर्ड दैट 192.168.12.2, जैसे कि ये वाला आईपी एड्रेस और ये वाला राउटर. सो यहाँ से वो पैकेट यहाँ पे आ जाएगा and then this is directly connected, so router know to send this packet here. Same और similarly अगर 192.168.3.0 के लिए मेरे पास कोई पैकेट आता है तो I know it has to be from this route, and similarly 20.3 के लिए अगर कोई आता है तो same route, right? You can also run command जो show IP route. यहाँ पे you will get more output, जैसे कि when I run command show IP route RIP, हमें सिर्फ specific RIP related ही route मिले, but if you have more routes वहाँ पे static route होंगे और directly connected routes होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो C indicates it's directly connected, and if you see there is something called L, you will see this all short forms or a mnemonics here. So L
I L means local and C means connected, right? So connected directly to this interface, जैसे कि 1.0 ये वाला नेटवर्क ये Z00 से डायरेक्टली कनेक्टेड है. 1.2 this interface, this one is also directly connected or it's a local. So यहाँ पे अगर मैं L देख रहा हूँ तो that means local, which means this IP address is this guy. इसका मतलब होता है 192.168.1.2 is directly connected to this, but the symbol is local, which means ये इसी को कॉन्फ़िगर्ड है, इसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है. देन जैसे कि हमने राउट देख लिए और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 192.168.12.1 is directly connected to 0.1, so it's also local, ये इसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है. एंड रेस्ट आर दी रिप राउट्स. So ये राउटर्स ने ये सारी चीजें लर्न की है, that's why we are able to communicate. For the safer side और for the understanding, सेम कमांड हम बाकी राउटर्स में भी जाके लर्न कर लेते हैं. सेम कमांड्स बाकी राउटर्स में भी रन करते हैं. So let me just run show IP RIP show IP router RIP. Same you can see 192.168.1.0. अगर मुझे इस नेटवर्क पे if I want to go to this network 1.0, I have to use this as a next hop 192.168.12.1. Yeah, this one. Like that 192.168.3.0, if I want to reach there, 3.0 is here, so 23.1 would be my next hop, right? The similar command अगर मैं run करता हूँ show IP route, so I'll get more detailed and locally connected and connected routes. And for the betterment command to router C, exit show IP route RIP. यहाँ पे भी you will see the same thing 192.168.1.0. If I want to go here, I will go via this 23.2. If I want to go 2.0, same 1. Then 12.0, the same is the next row. And let's run without RIP. You will see all connected routes. So I hope basic RIP lab routing information protocol lab आपको clear है. You can reproduce same things in your environment and test how RIP works. So इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में RIP with respect to cyber security concept मैं बताने वाला हूँ. So please watch the next video. Till then, thanks for watching this video and have a wonderful day.